Hello my dear learners, welcome to our channel Odisha EXPLORIST। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत समस्त एंड धन्यवाद कि आपण मैंने समस्ते भल से एंड बेस्ट वे रे प्रिपरेशन कर निजर डेडिकेशन आपण मैंने समस्ते रखी येस एंड सब भल से मन रखु जिते भी प्रिपरेशन हे सब माइंड रखिकी प्रिपरेशन हे कि आपको एग्जाम अल्प दिन रहा तो तापाई आपण मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन सहित आगू जावा दरकार। तो आज जो सीरीज अच्छी ये आम पॉलिटी किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कसन करवा जो गुड़िक आपको हेल्पफुल रहा सहित जदि आपण मैंने येस अनएकाडेमी प्लस को सब्सक्राइब करने चाहते एंड ये आपण येस डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्लासेस दि जाऊँगी एंड जब भी आपण मैंने सब्सक्राइब करने चाहते कोड यूज करूँ अमिया 10 ए डायरेक्ट 10% डिस्काउंट मिल जाव एंड बाकी अनएकाडेमी आश्योरिटी अच्छी आपण मानी सब बेस्ट वे रे प्रिपरेशन करा प्लस क्लासेस फ्री क्लासेस बैच कोर्सेस एएसओ स्पेशल एवं नुआ बैच कोर्स आपणर जो मैंने जॉइन होगा चाहते येस बैच नंबर 2 रे आपण जॉइन हेबे 8 तारिख रु ही स्टार्ट होची माने आज ठारू आमर ए नुआ सीरीज स्टार्ट होची तो तेणु करी ट्राए करंतु जो माने जॉइन होगा को चाहते एंड जिते भल से एंड बेस्ट वे रे प्रिपरेशन है कि निजर प्रिपरेशन होगा नियंतु रानी वेलकम टू द लाइव सेक्शन। गुड मॉर्निंग स्वागत समस्त यही सब कोर्सेस आपणर अच्छी देन येस टॉपर सीरीज भी रोची टेस्ट सीरीज भी आपण माने पाइबे तो सब्सक्राइब करंतु सब्सक्राइब कला बेले कोड यूज करेंगे निहाती भाव में अमिया 10 एंड मते मेसेज करेंगे 9090019332 को। तो डायरेक्ट आम स्टार्ट करवा क्वेश्चन एंड आंसर पॉलिटी क्वेश्चन पूर्व जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी लाइक करूँ एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करूँ। अरे बहुत ही बढ़िया ठीक ठाक हो गला तो जून 4 जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थिला। ओके क्वेश्चन देखो under article 169 of the constitution makes the provision for the abolition of or आम देखिए creation of आपन को डायरेक्ट पचार आर्टिकल 169 तो 169 कथा जदि देखा ये आर्टिकल एक्चुअली कौन स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा या राज्यसभा फंडामेंटल ड्यूटीज या लेजिस्लेटिव काउंसिल तो सिंपल कथा जदि आम देखा जावा दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट इज कवर्ड इन आर्टिकल 169। आर्टिकल 81 specifies the number of seat for the Lok Sabha. Article 51A specifies the fundamental duties. Article 80 specifies the number of seat for the Rajya Sabha. Okay. छोट छोट जिन गुड़ा बट भल से आपण मैंने जानी रखा दरकार एंड बुझे दरकार जो ये टॉपिक उपर आम कि भी डिस्कसन करुचे तो ये आपन को देइछि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ए स्टेट ये आम कहीपर मेक्स द प्रोविजन बेसिकली 169 माने येस लेजिस्लेटिव काउंसिल आपणर जो रोचे स्टेट रे तापाई बेसिकली फीचर्स करुच्ची व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विथ स्पेशल प्रोविजन टू एससी एसटी ओबीसीज एंड एंग्लो इंडियंस देखु एससी एसटी ओबीसी और एंग्लो इंडियन हेले पार्ट 16 6 18 या 14 सब मन रखिए ये पार्ट 16 जो आर्टिकल 332 342 भितर रोचे तो से आम कहीपर पार्ट 16 रहा दैट इज डील्स विथ स्पेशल प्रोविजन फॉर क्रिएशन ऑफ क्लासेस जो एससी एसटी ओबीसीज ओके या एक्चुअली बेसिकली रोचे देन पार्ट 6 ये 152 टू 237 ये स्टेट्स रिलेटेड पार्ट 18 352 टू 360 डील्स विथ द प्रोविजन टू इमरजेंसी पार्ट 14 323A टू 323B दैट इज ट्रिब्यूनल्स तो बेसिकली आमर पचार थिला क्रिएशन ऑफ क्लासेस पार्ट 16 330 रु 342 भितर रोची। द इंटरस्टेट काउंसिल वाज एस्टाब्लिश इन 1990 in the years pursuance of the recommendation made by देखो इंटरस्टेट काउंसिल जो ट्रिब्यूनल बसा जाउथिला ये किछि रहुथिला तो ताको आपनकर कहि परिया केमिति ये इंट्रोड्यूस कराला मुखर्जी कमिशन सकारिया कमिशन मंडल कमिशन ये आमे कहि परिया खोसल कमिशन तो एस्टाब्लिशमेंट इन 1919 pursuance of the recommendation made by ये आमे बेसिकली कहि परिबा ये सरकारिया कमिशन जो गुडी रहुची से ही आमे कहि परिबा इंटरस्टेट काउंसिल एस्टाब्लिशमेंट करिया पई रिकमेंड करथिले। Pre education good morning. The yes comptroller and auditor general of India can be removed from office like in like manner and or like ground देखो CAG तांको आमे जदि देखिबा removed from the office
ये आम कह हाईकोर्ट जज या प्राइम मिनिस्टर या सुप्रीम कोर्ट या नन ऑफ द अबव देखि रखु सुप्रीम कोर्ट रो जज द सीएजी ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस इन लाइक मैनर ऑन लाइक ग्राउंड आज सुप्रीम कोर्ट जज जमी सुप्रीम कोर्ट जज येस आम कहीपर जो फीचर्स गुड़े था ये आम कह जो आर्टिकल्स या जो प्रोविजन अच्छी से अनुसार आम कहीपर सीएजी भी ये श्री गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द लाइव सेक्शन ए प्रोसीजर वेयर बाय a proposed legislation is referred to the electorate for settlement by their direct vote. A procedure whereby a proposed legislation is referred to the electorate for the settlement by their direct vote. Direct vote जदि देखिबा ये रेफरडम ये आमे जदि देखिए ये रिपीटेशन ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ये रिपब्लिक देखि रखंतु proposed legislation is referred to the electorate for the settlement by their direct vote. Direct vote गले या को आमे कहिथा रेफरडम भलो से मने रखंतु ए पब्लिक वोट विथ पॉसिबली लीगली बाइंडिंग consequences and direct vote रे आसी थाए and yes आमे जदि देखिया रिप्रेजेंटेशन हेले the sending back someone to his country or origin such as an illegal immigrant or prisoner of war. Representative democracy आपण माने समस्त जानि सिंती yes ये आसी था in modern times what is commonly known as democracy amar to representative democracy. Republic कहले defined by some source as a simple democracy but otherwise loosely described to form a government wherein word or deed rules is constrained by institutional framework and not by selected few. Okay, republican country माने समस्त जदि देखिबा जनक ऊपर न थाए समस्त ओपिनियन एंड समस्त जदि देखिबा येस माने समस्त कथा को मैटर करा जाय था या समस्त कथा को कंसीडर ऊपर निया जाता है बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट येस द एलिमेंटरी एजुकेशन मेड द फंडामेंटल राइट अंडर 21A. ओके एजुकेशन को फंडामेंटल राइट भाव रे 21A आर्टिकल 21A अंडर रे आमे कहि परिबा. थैंक यू प्री एजुकेशन धन्यवाद फॉर योर मोटिवेशनल वर्ड्स. ये बहुत खुशी लगे जिते एमती किसी शुणे एंड बहुत ही खुशी लगे एंड आप ना भी फ्री एजुकेशन अच्छे एंड ऑलरेडी आम वीडियो फ्री रे भी देते बट आप हेल्प है खुद जानी खुशी लगे. थैंक यू इतिश्री बहुत ही बढ़िया दैट इज बी इज राइट आंसर. आपको आप मन रखिपारे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल आम कहीपर जो रोचे अमेंडमेंट एक्ट provides right to education until the age of 14 14 वर्ष पर्यंत. अर्ली चाइल्डहुड केयर until the age of 6 6 वर्ष पर्यंत गहम डाली गुड़ एगुड़ा सब मिल. 81st constitutional amendment act 2000 protect SC ST reservation in filling blockage of vacancies. 88th constitutional amendment act 2004 to extend statutory cover for levy and utilization of service tax. 96th constitutional amendment देखो 113th constitutional amendment bill एटा किंतु एक्ट हेले 96th constitutional amendment act जोटा ओडिया को ओडिया करा जायतिला. सिक्किम वाज मेड फुल फ्लेज स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया. सिक्किम को जदि देखिबा गोटे फुल फ्लेज स्टेट भाव रे केबे एस्टाब्लिशमेंट करा जायतिला 35th constitutional 37 38 ये आम कह 86 या किसी अलग एगुड़ा आपण मैंने भल से जानी रखा दरकार एंड बुझा दरकार जो दूसरी सिक्किम को आमर ये 36th constitutional amendment act सिक्किम आज ए स्टेट ऑफ विथ यूनियन ऑफ इंडिया. 38 हूँ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर पास द ऑर्डिनेंस एंड ये आम जो देखिए नेक्स्ट जो पार्ट आपणर आसूची 37th आसूची 37 कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश. देखो 36 37 ओके 35th हूँ टर्म्स एंड कंडीशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ सिक्किम. 35th हूँ दी जन टर्म्स एंड कंडीशन. 36th हूँ सिक्किम 37th हूँ अरुणाचल प्रदेश. 38 हूँ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर टू पास ऑर्डिनेंस. थैंक यू फजल अली कमिशन. थैंक यू तीसरी सिंह एंड एवं टी क्लास कमी जाइए बट आगू को क्लासेस एवं आम पुणी आगू नवा. कमिशन अपॉइंटेड इन डिसेंबर 1953 टू कंसीडर द क्वेश्चन ऑफ स्टेट रिकॉग्निशन एक्सेप्टेड इन. देखो फजल अली कमिशन अपॉइंटेड इन डिसेंबर 1953 टू कंसीडर द क्वेश्चन ऑफ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्टेड इन. ये आम कहीपर लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ ओके रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट. देखो बेसिकली जो स्टेट को आम स्टेट
रेकग्निशन मिलूला तो ये हूँ लैंग्वेज बेसिस रे सत्यव्रत साहू निहाती भाव करवा पजल कमिशन द स्टेट मणिपुर त्रिपुरा एंड मेघालय वर फॉर्म्ड देखो त्रिपुरा मणिपुर आ मेघालय ये जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट आसूची आपको आप भल से मन रखिए इन 1972 मणिपुर मेघालय एंड त्रिपुरा वर ग्रांटेड फुल स्टेटहुड बाय नॉर्थ ईस्ट रिकग्निशन एक्ट 1972 ओके नॉर्थ ईस्ट रिकग्निशन एक्ट 1972 and Mizo Hill region of Assam and NEFA were converted into union territory. When was the second backward class commission under the chairmanship of BP Mandal जो SCBC social educational backward classes establishment कराइला second backward classes commission तो ये क्वेश्चन गुड़ा डायरेक्ट मन रखा दरकार डायरेक्ट आपन आसी था इन 1979 ओके that is it was established in India on 1st January 1979 by Janata Party government under Prime Minister Morarji Desai with a mandate to identify the social or educational backward classes of India. When was the reservation of 27% government job for other backward classes declared for the first time in independent India? When was reservation of 27% government job for other backward classes declared for the first time in independent India? आपको आम जब देखा जा ये 1990 Indian the national yes foreign government declared that it would provide 27% reservation for social educational backward classes जो SCBC आसूची 1990 रे where any house of parliament लोक सभा राज्य सभा is adjourned without the naming day of reassembly it is known as क्वेश्चन टा टिके ध्यान रखिए से कहूँ व्हेन हाउस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा एंड राज्यसभा इज adjourned विदाउट द नेमिंग ए डे फॉर रीअसेंबली इट इज नोन एज ताको आम सिंपल कही था जिते कौन जिन रीअसेंबली करने पूर्व मेंशन करुच्ची छोट छोट जिन बड़े ध्यान रखिले आपने जानीपारे आर्जनमेंट ऑफ एक्चुअली डी ऑप्शन टा ना बट डी ऑप्शन आम जी देखा yes adjournment of signed die जो आसीता है termination of sitting of adjourn without naming a day okay जदि देखिबा देखो demand of grant embarking or budgetary allocation for meeting the plan and non plan expenditure of ministry department adjournment debate जो थे adjournment or motion adopted by the house of हमें जदि देखिए debate on a motion resolution bill in which house is engaged until yes future day or signed day specified in the motion adjournment of the sitting of houses termination of the sitting of house which meets again the appointment for the next sitting जिते दिया जाता है डी ऑप्शन टा नाथिला adjournment signed day termination of sitting of house without any definite day being fixed for next sitting ପାଇଁ କୁହାଯିବନି कि केबे बसियो किंतु आमे जदि देखिबा हाउस को डिसॉल्व करा जिवो छोट छोट जिन गुड़ा बड़े भल से आपने जानी रखा दरकार नेक्स्ट वन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ ऑर्गेनाइजेशन कंपोजिशन ड्यूरेशन ऑफिसर्स प्रोसीजर प्रिविलेज पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर ये ध्यान रखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ ऑर्गेनाइजेशन कंपोजिशन ड्यूरेशन एंड आम जी देखा जा ऑफिसर प्रोसीजर प्रिविलेज पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर ये आम कहीपर yes A is right answer 79 row 122 and part B article 79 of Indian constitution says that India will have a parliament for making law to run democratic setup of the country 79 to 122 in part B of the constitution of India deals with the organization privilege and powers on the parliament how many times did the preamble of the constitution be in amendment today वर्तमान सुधा आम जदि देखा आमर प्रिएम्बल को केते थर आमेंडमेंट करा जायछि क्वेश्चन गुड़ा इंपोर्टेंट वन एंड आपण मैंने समस्त बुझी रखा दरकार टोटाली आम जदि देखा जा येस ओनली वन्स आपणर कराई द प्रिएम्बल अमेंडेड ओनली वन्स इन सो फार एंड ये 18 डिसेम्बर 1976 जोटा को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भाव में आम कही रखुचे एंड द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट पुश थ्रू सेवराल चेंजेस इन द 42nd अमेंडमेंट एक्चुअली आपको कहा जाता है 1976 जोटा को आज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आम धरी था ओके यही छोट छोट जिन बड़े भल से जानी रखु नेक्स्ट वन हाँ इन व्हिच हिस्टोरिक केस डिड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होल्ड दैट
preamble of the constitution of India is part of the constitution and hence can be amended. देखि रखु क्वेश्चन जो आपको पचारुची इन व्हिच हिस्टोरिक केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होल्ड दैट द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आपको भी आम जदि चाहिए निहती भाव प्रॉपर जदि देखिए चेंजेस रोचे अमेंडमेंट भी करहब तो सब ये जिनस गुड़ा ध्यान रखिए जो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पचारि थाए कहीं या ही सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पचारिकी निहत आसोसीएट कराई थाए इन केशवानंद भारती केस वर्सेस यूनियन ऑफ जो स्टेट ऑफ केरला एमें कहीपर 1973 या इम्प्लीमेंट करा छोट छोट जिनस गुड़ा बहुत भल से आपने जाणी रखुद जो डायरेक्ट या रिलेटेड पचारूँ ये 73 कथा केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला The duties of chief minister of a state with regard to furnishing of information to the governor is enshrined in yes this Kerala hi asibo the duties of chief minister of a state with regards to furnishing the information to the governor is enshrined in आको आमे जरी देखिया जिबा आर्टिकल 167 आर्टिकल 167 yes enshrining the furnishing of information to the governor ये article 167 ने आसुची the governor of a state is empowered to grant pardons and आमे जदी देखिया जिबा yes and suspend remit or commute sentence in certain cases जो तरे डायरेक्ट आमे कहि परिबा हमर राष्ट्रपति को पाखरे yes जो क्षमा देवार अधिकार थाए राजक्षमा तो ये आम जब देखा जा येस आर्टिकल 161 भल से मन रखु पावर टू ग्रांट पार्डन एंड सस्पेंड रेमिट कम्यूट सेंटेंस द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट शैल हैव द पावर एंड प्रोवाइड्स येस साइड रेमिशन पनिशमेंट एंड आम कहीपर येस 161 अंडर ही आसूँ द 50 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ येस द माने 5th शेड्यूल एटा एक्चुअली 12th शेड्यूल एटा अच्छी 5th शेड्यूल कथा पचारुची तो 5th शेड्यूल कथा जदि देखा ध्यान रखिए ये आप डायरेक्ट क्वेश्चन शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब आम कहीपर द 5th शेड्यूल ओके ये आम जो देखा जा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब ओके नेक्स्ट वन द प्रोविजन आर आज कवर्ड बाय आर्टिकल 343 to 351 अंडर पार्ट आम जदि देखा एक्स बी डबल आई गोटा पार्ट 17 ने आसूची पार्ट 17 ने एक्चुअली आर्टिकल 343 रु 351 भितर कौन कौन रोचे सिंपल जिनस भल से मन रखु दैट इज द ऑफिशियल लैंग्वेजेस द प्रोविजन आज कवर्ड बाय आर्टिकल 343 रु 351 अंडर पार्ट आम कहीपर 27 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ ऑफिशियल लैंग्वेज वी शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ पावर्स authority and responsibility of municipality एडी आपण देख रखु हुई शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ पावर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपालिटी ये आपण भल से मन रखिया दरकार जो आमर आड करा जाइतिला यस 12th शेड्यूल एंट्रीज 3 6 9 10 11 that is 3 for planning and economic social development 6 for public health sanitation 9 for safeguarding the interest of weaker section and 10 for slum improvement and upgradation 11 for urban poverty elevation okay तो ये गुड़ा हूँ 12th शेड्यूल एंड 3 6 9 10 11 ये सब आर्टिकल अंडर आउची द प्रोविजन ऑफ एडजॉइनिंग ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैली इज लेड डाउन इन जो इंटरस्टेट रिवर भितर कन्फ्लिक्ट होची आम कहीपर इंटरस्टेट रिवर जो रोचे तो ताको आपण भल से मन रखा दरकार आर्टिकल 262 दैट इज पार्लियामेंट मे बी ले प्रोवाइड द एडजॉइनिंग ऑफ एनी डिस्प्यूट जदि जो इंटरस्टेट आमर जमी कह छत्तीसगढ़ ओडिशा भितर महानदी को लेकिन तो ये गुड़ा हूँ आम कह इंटरस्टेट है आर्टिकल 262 इज राइट आंसर छोट छोट जिन बड़े भल से जानी रखु द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी as enshrined in the preamble of the constitution of India have been taken from equality fraternity ये आम कहीपर कौटू आसूची माने कौटू अणा जाइए फ्रेंच रेवोल्यूशन रशियन रेवोल्यूशन और आयरिश रेवोल्यूशन ये बेसिकली आम जो देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन आमर आइडिया आसूची दैट इज इन 1789 द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी as enshrined in the preamble of the constitution of India have been taken from the French Revolution. Which part of Indian Constitution is described
द माग्ना कार्टा ऑफ इंडिया माग्ना कार्टा कहला माने इंपोर्टेंट आमर जदि कहि परिबा गोटे नेशन पई जो आसीता इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट या इंपोर्टेंट बिल जेतले पास करा जाता है ताको माग्ना कार्टा कहा जाता है तो माग्ना कार्टा कहला माने ए इज राइट आंसर दैट इज पार्ट 3 दैट इज फंडामेंटल राइट आर्टिकल आमे जदि देखिबा 12 to 35 is described as Magna Carta of India and Wood Dispatch is called Magna Carta of English Education in India. History रे आपन को Wood Dispatch विषय मेंशन करता है. It is a largely been incorporated by Bills of Rights of US Constitution and also called Magna Carta of Indian Constitution because it is justiciable और आमे जो देखिए enforceable. Which article of the Constitution defines the term State of India in context? State कथा जदि देखिबा yes एडी हमर भलो से ध्यान रखिया दरकार एंड बुझिया दरकार B is right answer according to article 12 the Constitution of India the term state can be used to denote the union and आमे जदि देखिबा and a state government. The parliament and the state legislation are all local and other authorities within the territory of India or under the control of Indian government. Article 12 भी actually mention करूची. Next one ध्यान रखिबे क्वेश्चन गुडा जेतोले आपन को पई आसुची बहुत ही बढ़िया रुद्र प्रसाद मल्लिक एंड तीसरी एंड हमर विकास मल्लिक कोडाला. The inclusion of separate chapter on fundamental duties in the constitution was recommended by देखो फंडामेंटल राइट्स सहित फंडामेंटल ड्यूटीज कथा जदि देखिबा बहुत ही बढ़िया या आमे कहि परिबा यस हमर आसुची इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर पे ड्यूरिंग इंटरनल इमरजेंसी 1975 रो 77 द कमिटी constituted includes separate chapter or fundamental duty. The committee was Sardar Swaran Singh committee in 1976. Part आमे जदि देखिबा 18 of the constitution deals with 18 नंबर पार्ट आमे जदि देखिया जिबा बेसिकली कहा ऊपर फंक्शन करू थाए 18 नंबर कथा जदि देखिबा इट इज इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18 completion of the law of petitioning the constitution of India as a country union state is made of the part of constitution of articles on emergency provision. Very good एटा होची emergency पई part 18 टा आपन आसुची. Right to freedom of religion as enshrined in article 25 or 28 includes right to freedom of religion as enshrined in article 25 or 28 ये हमें जदि देखिया जिबा freedom of conscience free position या practice and propagation of religion या all of the above जेतोले क्वेश्चन देता है right to freedom of religion तो ये हमें जदि देखिए all of the above is right answer freedom of conscience free position practice and propagation of religion. The right to move to the Supreme Court for the enforcement of fundamental rights including the writs of habeas corpus mandamus prohibition criteria or quo warranto ये हमें जदि देखिबा आर्टिकल 32 अरे सबुड़ा उठी अछि छाड़ा 3 ही लिखियो ने 32 that is right to constitutional remedies बहुत ही बढ़िया आर्टिकल 32 जो हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट वन the right to acquire hold and dispose of property was deleted from the chapter of fundamental right. देखो right to acquire hold and dispose of property was deleted from the chapter of fundamental right. ये हमें गया 44th 42nd 88th या 48th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको पचारे था पूरा ध्यान देकी आपको करिया पड़ो दैट इज ए इज राइट आंसर 44th constitutional amendment act that is the right to acquire hold and dispose property was deleted from the chapter fundamental right आकु रखी दिया जाइतला कोन legal right रखा वाला. Which article grant protection to person who are arrested or detained जदि अरेस्ट होसंदी डिटेन करसंदी तो नियति आबरे तांकु जे पर्यंत कोर्ट रे प्रेजेंट करा जायनी जे पर्यंत तांकु पनिशमेंट दिया जायनी तांको पई जो आर्टिकल रखा छि दैट इज आर्टिकल 22 ग्रांट्स द येस प्रोटेक्शन ऑफ अ पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड. आर्टिकल 40 which require the state to organize village panchayat and authority to enable them to function as a unit of self government. देखो सेल्फ गवर्नमेंट कथा जदि देखा आपण मैंने ध्यान रखा दरकार एंड बुझे दरकार जो ये आपन को सेल्फ गवर्नमेंट कथा पचारुची दैट इज ए इज राइट आंसर आमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी आर्टिकल 40 भितर रोचे तो डीपीएसपी ही जीव बहुत ही बढ़िया.
The law which aims at protecting the monument, places and object of national importance. The law which aims at protecting the monuments, places and आमे जदि देखिबा yes आमर आसुची and object of national importance ताकू आमे कौन कही था छोट छोट जिनस गुड़ा भल से बुझी रखिया दरकार एंड जानिया दरकार जिते आमे या विषय डिस्कशन करी था. C is right answer. The Ancient and Historical Monument Archaeological Site and yes Remains Act यह विषय में कहा जाता है. ओके आर्टिकल 49 The cabinet yes is the nucleus of power in cabinet कथा जदि देखिया पंचायत प्रोग्रामेटिक समिति पार्लियामेंट्री आसुची ये आम कहीपर कौन द कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ पावर भल से मन रखु ये पार्लियामेंट्री सिस्टम रो येस यू आर जॉइनिंग आम जदि देखा पार्लियामेंट्री सिस्टम एज कैबिनेट सिस्टम बिकॉज द कैबिनेट इज न्यूक्लियस ऑफ पावर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम छोट छोट जिनस बट भल से जानी रखा दरकार. द फोर मोस्ट बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनक्लूड्स द फोर मोस्ट बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको जदि आम देखा जा येस आगो आप छोट छोट जिन बड़े भल से मन रखु यहीटा ही ना एटा ना ऑप्शन नहीं दैट इज आम कहीपर सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंडेंसी रूल ऑफ लॉ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी जुडिशियल रिव्यू एंड आम कहीपर 44th एटा The right to acquire, hold and damage dispose property was deleted from the chapter of fundamental right. ये हूँ 44th Constitutional Amendment Act 1978 रे आपको आपनर फंडामेंटल राइट को हटेकी आमर कौन कर दिया ना आपको आमर सिंपली कर दिया गोटे लीगल राइट. ओके द राइट टू एक्योर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट बाय 44th Constitutional Amendment Act 1978. The Citizen Act 1955 yes because prescribe the way of losing citizenship और आम जदि देखिए acquired under the act period it under the conservation that is deprivation yes renunciation termination ये all of the above ध्यान रखिया दरकार एंड बुझे दरकार. D is right answer. Citizenship 1955 prescribe the way of जदि देखिबा losing citizenship acquire under the act period to the under the constitution that is आमे कोई पर deprivation renunciation और आमे कोई पर termination. D is right answer. The constitution provide prohibition of traffic in human beings and forced labor. ये आमे जदि देखिबा को अंडर रे आसुची ध्यान रखिले एगुड़ा आपण माने जानी रखिबे एंड बुझिया चेष्टा करिवे. ये आम कहीपर ए इज राइट आंसर. आर्टिकल 23 बिंग्स फोर्स लेबर अंडर द राइट टू एग्निस्ट आम जी देखा येस आर्टिकल 23 इज राइट आंसर. द कमिटी व्हिच वाज अपॉइंटेड टू आइडेंटिफाई द येस आम क्रिमिलेयर एमंग द ओबीसीज ओबीसी रे आपण माने जानिथिबे येस क्रिमिलेयर और नॉन क्रिमिलेयर आपण रहउचंदी एटा 23 ना 23 टा C is right answer. एटी आपण माने छोट छोट आंसर बड़ भलो से बुझी रखिया दरकार. The term was introduced by the yes Tennath Commission in 1971 which directed that criminal should be excluded from the reservation or civil post. It was also identified later by Justice Ramanandan Committee in 1993. Yes. आर्टिकल 17 नंबर आर्टिकल एक्चुअली कौन हटेइथिला अनटचेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन इक्वालिटी और टाइटल्स एगुड़ा जिते आपण मैंने भल से बुझे से जानीपर
आर्टिकल 17 abolish untouchability छुआ छुआ भेदभाव को आर्टिकल 17 हटेइथिला द yes surpation of immoral traffic in women and girls ये आम इमोराल ट्राफिक इन वुमेन्स एंड गर्ल्स एक्ट ये आम कहीपर केवे पास होता दैट इज इन 1956 ऑप्शन सी इज राइट आंसर इन द ईयर 1956 इज राइट आंसर 1956 रही immoral traffic in women and girls that is passed in the year of 1956 is right answer. Dr. B.R. Ambedkar described directive principle of state policy ये आम कहीपर क्या अंडर आसूची एटा नहीं एक्चुअली नोबेल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाँ माने गांधीयन पॉलिसी एटा किंतु बी आर आंबेडकर को हिसाब रे दैट इज द स्टेट पॉलिसी एज ए नोबेल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी इज राइट आंसर. द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट वाज पास्ड इन अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट ये को अंडर रे हमर पास होईची डी इज राइट आंसर येस आपको आपण भल से जानी रखु इन द ईयर 1976 रे आपको इम्प्लीमेशन कराइथिला सेंट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर इनसाइंड इन कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स आम जदि देखिया को जिबा भल से बुझी रखिया दरकार एंड जानिया भी दरकार बी इज राइट आंसर आर्टिकल 29 ये 30 भितर आसूची ओके छोट छोट जिनस गुड़ा बड़े भल से जानी रखिया दरकार एंड बुझे दरकार व्हिच आर्टिकल्स डिक्लेयर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ एंड हेंस कैन नॉट बी चैलेंज्ड ओके छोट छोट जिनस गुड़ा बड़े भल से जानी रखिया दरकार एटी से कही व्हिच आर्टिकल डिक्लेयर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ एंड हेंस कैन नॉट बी चैलेंज्ड एटी आम कहीपर आर्टिकल 13 डिक्लेयर दैट constitutional amendment is not a law and hence can not be challenged ओके छोट छोट जिनस गुड़ा बट भल से गुड़ा आपण मैंने जानी रखिया दरकार जो या रिलेटेड आपन को क्वेश्चन पचारुची द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ एनफोर्सिंग आर्टिकल 24 प्रोहिबिटिंग द एम्प्लॉयमेंट ओके यस आम जदि देखिबा ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 years is any factory or other hazardous activities is ये को आर्टिकल अंडर है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेटर एक्ट अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट या प्रिवेंशन ऑफ या आम कहीपर आरिस्टोक्रेटिक एक्ट तो ये आम जदि देखिया जावा ध्यान रखिए ए इज राइट आंसर 24 दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ एनफोर्सिंग प्रोहिबिटिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 वाज एनी फैक्ट्री और अदर hazardous activities is child labor. The Constitution of India has divided the powers between the center and the state in terms of okay C is right answer. The union list, state list and concurrent list. तीनिटा union होची central लेखी होनी, state list होची state and concurrent list both state भी आउ center भी interfere करता है. Okay. Thank you very much. समस्त आज सेक्शन ने जॉइन पार्टिसिपेट करिथिबारु इतिश्री विकास मल्लिक एंड प्राय इतिश्री एंड विकास मल्लिक को ही बहुत ही आसी आंसर प्राय समस्ते आंसर दौले धन्यवाद समस्त जो मैंने सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी एंड सोशल मीडिया हैंडल अच्छी जो सब आपने समस्ते येस आमको फॉलो करें डेली आपंप इम्प्लीमेंट कराऊँगी आपण मैंने ओपीएससी सब्सक्रिप्शन नहीं पारे 12 मंथर जदि सब्सक्रिप्शन नौ 2 मास आपको एक्सट्रा मिलूँ तो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन नियंतु आ एक्सट्रा येस आपण मैंने डिस्काउंट पाइपर तेणुक ट्राए करूँ सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब कला बेले कोड यूज करिए अमिया 10 एंड ये आपण मानक मेसेज भी मत करें जदि किसी डाउट रोचे थैंक यू वेरी मच धन्यवाद जय हिंद एंड जय जगन्नाथ थैंक यू।
Thank you.